So hey everyone, this is Aman, overflowStackDeveloper. So I'm a software engineer by profession, but for some weird reason today I decided, hey, uh, why not learn what I studied in class 11th and 12th, but this time using Claude instead of a teacher yelling at you. Bring your mother and tell her to twitch. She doesn't know how to solve this problem. That's why she has sent you so that you can come and eat our head. So नो pun intended. असली में ये सब सुना है स्कूल में. तो देखते हैं is can I learn class 11 12th chemistry physics maths concepts using Claude. Obviously you can, but I just wanted to give it a try. I've been using it to learn programming, but let's see if I can pull this off for class 11th and 12th chemistry. So next follow up, so the next thing that I wanted to clarify, why chemistry. ऐसी बात कुछ नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा मतलब मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई वाज थिंकिंग हाउ एम आई गोइंग टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज और सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो उसके लिए मेरे को थोड़ी दिक्कत आएगी. आई डोंट हैव, पता नहीं वो क्या टैबलेट एंड पेन यूज़ करते होंगे टू राइट नोट्स. तो अभी के लिए जो भी मेरे पास है, टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, I thought, okay, let's stick to something very simple. Um, so I just picked class 11th chemistry, and I know this is wrong because इससे पहले मेरे को 10th 11th 12th सब मैं like भूल चुका हूँ. So I graduated back in 2018, so it's been almost 8 years since then. चलो कॉलेज में भी पढ़ा था 4 साल, तो 2022 में ग्रेजुएट हुआ था. तो ऑलमोस्ट मेरे पास अभी 3.5 years का एक्सपीरियंस है in IT as a full stack developer. So anyways, having said all this, I've given you all this backstory. uh, yeah, let's get started. तो मैंने ये NCERT की वेबसाइट से बुक डाउनलोड कर ली थी, एंड लेट्स मेक नोट, लेट्स लर्न. लर्न तो नहीं बोलेंगे, चलो अपना ट्रॉमा दोबारा से, मतलब PTSD दोबारा से ट्रिगर करता हूँ मैं. बट आई थिंक इस फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें. तो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा सीखने का, वो तो मुझे भी खुद नहीं पता. ये मेरा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है, तो लेट्स सी हाउ आई डू इट. सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर लर्निंग यू हैव टू रीड. तो मैं पढ़ता रहूँगा एंड ऑल्सो एट द साइड आई विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स. ठीक है. यूनिट 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. Chemistry is the science of molecules and the transformation. It's the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules. ठीक है भाई, no clue who this person is. तो objective क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें. After studying this unit you will be able to, हाँ लिखा है you will be able to, but 2 साल पढ़ने के बावजूद भी ये सब कुछ समझ में नहीं आया था मेरे को. Appreciate the contribution of India in the development of chemistry. ठीक है भाई. Explain the characteristics of 3 states of matter, classify different substances into element compound, use scientific notation, determine significant figures. भाई ये क्या है भाई. Differentiate between precision and accuracy, define SI base unit. चलो भाई, जब पढ़ना है तो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ने की क्या जरूरत है. So science can be viewed as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding. पता है तुम ये बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्रॉम लाइन
लाइन बाय लाइन, जो भी तुम्हारे स्कूल की होती है ना, एंड द मोमेंट यू एंटर, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग या मेडिकल, जो भी है वो बुक्स इतनी मोटी होती है कि यू कैनॉट रीड देम लाइन बाय लाइन। मैं ये सोच के हैरान कि भाई ये लिखते कैसे इतना सब कुछ। पहले लगता था ये भी बहुत ज़्यादा है, बट अब ये देख के तो लाइक हंसी आती है। मतलब इतना मतलब बड़ा टेक्स्ट है, इतनी स्पेसिंग, डायग्राम होते हैं। कॉलेज के नोट्स देखना भाई, डायग्राम में मतलब लाइंस बनी होती है और वैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इजी हो जाना चाहिए मेरे को समझने में। देखते हैं कि अगर इतने 6 साल में मेरा दिमाग बढ़ा है कम हुआ है, ऑब्वियसली कम हुआ होगा। ठीक है। Curd formation from milk, formation of vinegar from sugar. Okay, so these are all chemical reactions, rusting of irons, example of changes we can come across. For the sake of convenience, science is subdivided into various category, and one of them is chemistry. Okay, ठीक है भाई। तो नोट्स बनाते हैं। ये टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं? ओके यार, दिस वन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा, स्पेलिंग के केमिकल रिएक्शन, जैसे मिल्क टू कर्ड, देन शुगर टू विनेगर, शुगर केन टू विनेगर, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब आईआईटी में नहीं पूछेंगे, तो अगर इफ यू आर वाचिंग देन देयर इज नो पॉइंट। मैं तो बस ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो साइंस को क्या बोलते हैं, लाइक हैव डिफरेंट सब कैटेगरी। ठीक है, उसमें हमारा आगे जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स में स्पेलिंग यही है क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आई इंजीनियरिंग भी इसी में आ गया, कंप्यूटर साइंस। ओके। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे बढ़ा था? केमिस्ट्री भी, एज वी अंडरस्टैंड it today, is not very old discipline. Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of searching for two interesting things. Philosopher's Stone, एक्चुअली ये Philosopher's Stone इस पे एक बहुत मस्त एनिमे है, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, द बेस्ट एनिमे, and I don't think there's any other anime that can ever beat Full Metal Alchemist Brotherhood. तो उसका भी इसी पे, मतलब फिलोसोफर स्टोन पे बेस्ड है। नॉट एग्जैक्टली जो केमिस्ट्री में ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट बहुत मस्त स्टोरी है। 64 एपिसोड्स ही है उसके। हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दैट। तो उसको हिंदी में क्या, पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेस मेटल इनटू एलिक्सर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। ना भाई, इमोर्टैलिटी चाहिए ही नहीं भाई। इमेजिन लाइक फाइलिंग योर ITF फॉर द लाइक indefinite period, वो भाई अलग ही ट्रॉमा है यार। ये सब नहीं चाहिए लेक्चर फॉर लाइफ। People in ancient India already had the knowledge of many science phenomena much before advent of modern science. They applied the knowledge in various walks of life. Chemistry developed mainly from alchemy and electrochemistry. Modern chemistry took shape in 18th century after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by the Arabs. तो वैसे लिख लेते हैं जी, क्या ही करना है। फिलोसोफर स्टोन, पारस,
which can convert all base metal to gold, and then elixir of life, which can grant you immortality. इसकी स्पेलिंग क्या है? फिलोसोफर। हाँ, स्पेलिंग में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। And other cultures, especially Chinese, Indian, had their own chemical tradition. एक बार मेरे को चेक करने दो यार, आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे लाइव स्ट्रीम में। केमिकल ट्रेडिशन, एक बार मेरे को चेक करने दो यार, आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे लाइव स्ट्रीम में। ट्रेडिशन, एक बार मेरे को चेक करने दो यार, आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे लाइव स्ट्रीम में। भाई एको हो रहा है मेरी आवाज़। भाई एको हो रहा है मेरी आवाज़। इसका मैं बाद में देखूंगा क्या सीन है। ए टू वॉचिंग भाई, कौन देख रहा है? इसका मैं बाद में देखूंगा क्या सीन है। ए टू वॉचिंग भाई, कौन देख रहा है? इसका मैं बाद में। ए टू वॉचिंग भाई, कौन देख रहा है? इसका मैं बाद। हाँ, आवाज़ एको हो रही है मेरी। चलो ठीक है, आई थिंक आई विल कीप दिस लाइव स्ट्रीम शॉर्ट। ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि इसके बाद आई वांट टू फिगर आउट कि मैं इस एको को कैसे कम कर सकता हूँ। ओके, so in ancient India chemistry was called rasayan shastra, rasantra, raskriya। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। It included metallurgy, manufacture of cosmetic glass, dyes. Then it came to Harappa in Punjab. Archaeological findings shows that baked bricks were even used in construction work. So it shows the mass production of pottery, which can be regarded as a just chemical process in which materials were mixed, molded, and subjected to heat. Gypsum cement has been used in construction work. It contains lime, sand, and traces of Harappans made क्या है भाई ये faience, a sort of glass which is used for ornament. They melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold, copper. ठीक है, ये हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट बैक्स टू द बिगिनिंग ऑफ Chalcolithic culture, and according to Rig Veda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during the golden cross of black polished। ठीक है, copper utensils, poetry, blah blah blah. The Charka Samhita mentions ancient Indians knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid. Nag Nagarjuna was a great Indian scientist. He was reputed chemist, an alchemist, and a metallurgist. The painting found on the walls of Ajanta and Ellora, which took fresh even after ages, testify of high level of science achieved. The number of classical texts like Ayurveda mentioned Dai Varam Mir Bhirat Samhita gives reference to perfume, cosmetics. Paper was known to India in 17th century as an account of Chinese traveler. Describes excavation at Taxila indicates ink was used in India from 4th century. It seems that the process of fermentation was well known to Indians, Vedas, and
mentioned about many types of liquor, charka. Samhita also mentioned ingredients such as barks of plant. The concept that matter is ultimately made of indivisible building blocks. Acharya Kanda, born in 1600 BC, originally known by the was the first proponent of the atomic theory he formulated. Uh, ये सब बहुत जनरल चीज़ें हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं. After the decline of alchemy, lactochemistry. लैक्टोकेमिस्ट्री क्या होता है भाई? लैक्टोकेमिस्ट्री चलो एक बार देख लेते हैं. Was a branch of early chemistry that aimed chemical method knowledge to understand and treat human body. Basically medical chemistry. So basically this electrochemistry equal to medical chemistry. Hmm. During this period of stagnation, pharmaceutical industry based on Ayurveda continued to exist, but it too declined gradually. It took around for Indians to learn and adopt new techniques. देखा ड्यूरिंग दिस टाइम भाई अंग्रेज आगे निकल गए. देखा modern science appeared in Indian scene in the later part of 19th century. From the above discussion, you have learned the chemistry deals with the composition, structure, properties, and interaction of matters. So I think this is the definition of chemistry: composition, structure, and properties and interaction of matters. Ah, so chemistry क्या है भाई? देख मैं बताता हूँ, मस्त से बताता हूँ एकदम. ठीक है. We have chemistry here. Next one. केमिस्ट्री में आ गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. स्ट्रक्चर देन उन मॉलिक्यूल से केमिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं and how they interact with other elements and their interaction with other elements. और कुछ मिस कर रहा हूँ आई थिंक देयर एक और पॉइंट है कॉम्पोजिशन कैसे बना है वो स्ट्रक्चर also and then we have composition, structure, properties and how they react. तो आई थिंक ये मेन चीज़ है जो केमिस्ट्री डील करता है. And is of much use to human beings in daily life. These aspects can be best described in terms of constituents of matter that are atoms and molecules. That is why chemistry is also called the science of atoms and matter. Okay भाई ठीक है मैंने कुछ बोला क्या? That's why chemistry
Chemistry is also called science of atoms and molecules. Okay. Atoms and molecules. So is it possible to count the number of atom molecules in a given mass of matter, have a quantitative relation between mass and number of these particles? So we get the answer of some of this question in this unit. अच्छा तो अगर हमारे पास कुछ केमिकल पड़ा है तो हम क्या बता सकते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हैं? तो ये है what is this chapter all about? Okay, so what is the objective of this chapter? To learn if we have some chemical, can we find how many molecules quantize chemical? क्वांटाइज केमिकल का मतलब कि क्या हम कैन वी रिप्रेजेंट देम इन नंबर्स? Chemistry plays a central role in science, is often intertwined with other branches of science. Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather pattern function. Chemistry contributes in a big way to national economy. Uh, Food, improving the quality of life. This is exemplified by large-scale production. Chemistry provides method for isolation of life-saving drugs. Some of the drugs are cisplatin and taxol. भाई अभी तक ये दवाइयाँ चल भी रही है, इनको रिप्लेस नहीं किया गया या ये सिलेबस आउटडेटेड है? Which are effective in cancer theory? The drug is AZT, azidothymidine, is used helping each patient. Okay, some uh, medicines. टैक्सोल हो गया, ओके टैक्सोल एंड cisplatin for cancer, AZT, acetothymidine for AIDS. Chemistry contributes to large extent chemical property. It has now become possible to design and synthesize new material. Optic fibers chemistry has helped in establishing industries such as utility goods. In recent years, chemistry has helped safer alternatives from CFCs, chlorofluorocarbon for भाई ये पूरा एक जिंदगी इसी के साथ निकालती थी, कभी भी कुछ आता था समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये हमेशा आंसर में जाता था. CFCs का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Many big environment problems continue to
to be a matter of grave concern to the chemists. One such problem is the management of greenhouse gases, understanding biochemical process, uses of enzyme. A developing country like India needs talent, creative chemist. हाँ भाई ठीक है. Nature of matter, you are already familiar with the term matter. हाँ भाई क्या matter चल रहा है? When you ask someone, it means what's going on. From your earlier classes, anything which has mass or occupied space is called matter. Hmm, introduction हो गया ये. So matter क्या होता है? Anything that has mass and occupies thing that has mass and occupies space. For example, book, pen, water. Now state of matter. So particles are held very close to each other. ठीक है, तो हमारे पास तीन स्टेट आ गए. इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख देते हैं. What is chemistry? Mm, states of matter. States of matter. तो हमारे पास आ गया है solid, liquid and gas. You solid, so particles are held very close to each other in solid, orderly fashion. There is not much freedom. In liquid are close, and in gases they can move around. Because of such arrangement of particles, different states of matter exhibit has definite volume but no definite shape, whereas gases have neither definite volume and interconvertible. On heating, a solid changes to liquid and liquid further changes to gas and reverse. Mm, okay, so solid में
held, particles are held together. Orderly fashion, no fear. स्ट्रक्चर लिक्विड में क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड, और उसके बाद गैस आ गया। वॉल्यूम and then definite volume, definite shape, then definite volume, no definite shape, and obviously you can the three state of matter are interchangeable. The three state of matters are interchangeable either by heating or cooling. तो जो हमारे पास solid है, you can change this to heat or cool, and then you get liquid. तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। And then you get gas. सर अभी इतना ही लाइव स्ट्रीम करूँगा, इसके डिनर के बाद वापस आता हूँ मैं।